हे गाइस, हाउ यू नाउ। कल बहुत अच्छा सेशन रहा डॉक्टर रवि पांडे के साथ। हमारा एक न्यू सेशन, गुरु मंत्रा तो आज है और गुरु मंत्रा मेरा बहुत पुराना सेशन है। बट कल जो हमने शुरू किया टॉक शो, वो शुरू किया रॉ एंड रियल, एंड इट वाज ऑसम। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था रॉ एंड रियल पे, विद डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर मी, राइट। सो आज गुरु मंत्र एक नया सेशन है जो मैं बीच बीच में लेता रहता हूँ, और काफ़ी सारे जो मुझे लगते हैं कि मेरे और आप लोगों के भी गुरु साबित हो सकते हैं डेंटिस्ट्री में, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जिन्होंने बेटर बनाया डेंटिस्ट्री को इंडिया की, और खुद को भी डेंटिस्ट्री के अंदर उभारा है। तो उनको मैं गुरु मानता हूँ, और उनके मंत्र क्या क्या हैं जिससे हम भी बेटर बन सकें। क्या उन्होंने बेटर किया, क्या स्टेप्स उनके ठीक थे, क्या उन्होंने गलतियाँ की, उन सब चीज़ों को हम इम्बाइब करते हैं। और आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, आज जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, वो मुझे लगता है कि वन ऑफ द कूलेस्ट डेंटिस्ट हैं इंडिया के। वो इस टाइम पे जीसी इंडिया के साथ काम करते हैं। ही पास्ड आउट, ग्रेजुएटेड इन 1998 फ्रॉम एएमई डेंटल कॉलेज कर्नाटका। और उसके बाद थैंक यू डॉक्टर रवि, वाइस डेंटिस्ट से हमारे पास कमेंट आ चुका है, थैंक यू सो मच। एंड ही वॉज सर्टिफाइड एज डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल फॉर गूगल, राइट। अलॉन्ग विद दैट ही इज मैनेजर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक एंड मार्केटिंग रिसर्च टीम के लिए, जीसी के लिए इज वर्किंग। सो इनसे आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ही वॉज इन टू अकेडमिक्स, ही स्टिल इज। He is into research with a big company like GC. He is into clinical things. ठीक है, जितना अच्छा आपको ये सब सिखा सकते हैं कि कैसे आफ्टर बीडीएस आपके पास ऑप्शन ओपन हो सकते हैं, और रिसर्च में स्पेसिफिकली एकेडमिक्स में ये आपसे शेयर करेंगे सर आज, डॉक्टर चंद्रमौली सर। और उसके साथ साथ हम जानेंगे उनका गुरु मंत्र अबाउट हिज जर्नी, अबाउट द स्टूडेंट्स प्रैक्टिशनर्स, उनके लिए क्या मंत्र है। और यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम दिस मैन अबाउट लाइफ, कि ट्रैवलिंग से लेके फ्रॉम हाउ टू एंजॉय लाइफ, हाउ टू बी द कूलेस्ट dental professional. So he is here now. So let's meet him. I have accepted the request, और मेरे ख्याल से okay. Hello sir. Hi Sagar, how are Wow, you? wow. I'm Hi so all. in with these pets, and Yes, Simba, someone whose name I Simba is know. there. Yeah, Simba is there with Yes. me. He's my doggo, so he's there with me. He's just sitting besides me. Oh, So they are my family. They are my kids. So they are always there with me. wonderful, wonderful sir. Welcome to the show sir. As I said कि नाम ही गुरु मंत्र है, तो हम चाहते हैं कि गुरुज जिनको मैं कंसिडर करता हूँ, और मुझे लगता है कि आर द पीपल जिन्होंने डेंटिस्ट्री को इम्बाइब किया, चेंज किया डेंटिस्ट्री को इंडिया में, जिनकी वजह से पॉजिटिविटी बनी हुई है कि यू कैन डू समथिंग इन डेंटिस्ट्री। ये फील अभी भी है, जो मुझे है आपकी वजह से। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई मेट, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि उस दिन से आई हैव दैट एनर्जी, यू नो अपने अंदर, कि सर से ये इम्बाइब हुई एनर्जी। एंड अबाउट रिसर्च एंड एवरीथिंग, आई एम टेकिंग एवरी नोट फ्रॉम यू, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आपको लोग जाने, और आपकी जर्नी से ये चीज पहचाने कि यू ऑल्सो कैन रीच अप टू दैट पॉइंट। तो आपका, मैं चाहूंगा आप बताएं कुछ अपने बारे में कि हाउ डिड यू प्रोसीड इन दिस जर्नी। Sure. First of all, thank you, Sagar. Thanks a lot for inviting me on your esteemed channel. So it's really, I since the day I know you, and after that I've been seeing you, the growth, the motivational talks you give, the videos you make are simply awesome. I'm really a great fan of you, and literally, and I mean it. I really am a great fan of you because what you're doing to dentistry is I really like that. So, not Thank you. many people do things for dentistry. We practice, we do everything we do for the patients, but for the dentistry, for the dental community, not many people go ahead and
mm, do something for them. Yeah, as you said, you have already introduced me, I suppose. So I'm working for GC. It's Yes, sir. been 8 years with GC. It's been Mhm. almost after I finished, it's almost 20 years of my career in dentistry. Yeah. I started off as a lecturer in dental colleges. I used to teach Mhm. prosthodontics, oral surgery. To begin with, I started with oral surgery and then I moved on to prosthodontics. I started teaching Yeah. prosthodontics. There are a lot of my students out there in North, especially I taught in three colleges. One is DJ started off and then IDST for maximum time and then Indraprastha Dental College. So these are the Yes. colleges where I was in prosthodontic department. So prosto is one of like very close to heart department. Dentistry is of course. So then, thing is, I was not only I from the day one when I was doing dentistry, I always wanted to do something new and something related to dentistry, but something versatile. So not just stick to Right. the clinical dentistry or anything. So had a chance when I was a lecturer, I had a chance of teaching dental materials. And what I Yeah. learned in my study when I was studying dental materials is like dental materials is very dry subject, and it is Mhm. only studied for or it is only taught for giving exams. So Hmm. that was the thing which was always there in my mind. No, dental materials is not because we are going to use these dental materials throughout our life. That is the Yes. thing which is going to be with us throughout our life. So what Yes. I started doing is I started, you know, thinking that how can we make dental materials interesting. So what I Yeah. did is I tried to relate it to the clinical aspects. I tried to teach them the clinical aspects of dentistry, how that is going to be used, how simple. There are a lot of things in dental materials, the textbook teacher talks a lot. Like इस तरह mix करना चाहिए, उस तरह mix करना चाहिए, इस तरह use करना चाहिए, इस तरह इस तरह. But the thing is, like, nobody makes you understand how clinically you got to use them and how is it Hmm. really important for it to be. Like, for example, एक छोटी सी चीज है, hue chroma value, राइट? Hmm. हम ह्यू क्रोमा वैल्यू बस उसका डेफिनेशन जानते हैं और जस्ट हम उसको यू नो इसके लिए यूज करते हैं ताकि लाइक डेफिनेशन जानते हैं वाइवा के लिए यूज करते हैं हाउ दैट इज really useful are in our clinical dentistry, how that we have to use that in our clinical dentistry is very important. Stress Yes. strain जो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, how do we have to use that? So all those things were there in my Hmm. mind when I used to teach prosthodontics and dental materials. Slowly, that keen thing came inside my mind, and then I used to study books. I used to check out all the articles, try to get things out of the articles, and that led me, and like and with my some family background of my family is all architects and into civil engineering. So I started doing something called as clinical designing and planning. So थोड़ा वो Sir, स्टार्ट किया. I'm really sorry. I'm interrupting. Am I the one जिनकी कॉल आ रही है? नो नो नो, आवाज आ रही है बीच में? ओके. नहीं नहीं, कोई मेरी साउंड तो कॉल आ नहीं रही है? है. नहीं 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 नहीं. सर, मेरी तो नहीं. ओके, राइट. हाँ. प्लीज प्रोसीड सर. तो रियली सॉरी. so that was the thing, like I did a bit of clinic planning designing because I was more into sketching, painting and all that. Oh wow. Then further went on and I got an opportunity to be a deputy editor for Quintessence Publications Germany. So because of Wow. my dental materials knowledge, because of that, in due course, I was also consultant to two dental companies from Brazil called as FGM and Biodynamica. FGM is basically Okay. for teeth whitening, and Biodynamica Yes, is yes, they yes. used to do green dentistry kind of products. They were Right, not that right. big things, but yeah, kind of. Then I got a chance to become a deputy editor for Quintessence Journals. I started doing all that. And 3 years in Quintessence, I got an opportunity from a company, GC, which Wow. was run by, again, a dentist.
which is Okay. was taken care by dentist in India. That is Dr. Sriram. And he was one Hmm. of my idol because he was, again, he was leading the world-renowned dental company in India. So he set up a manufacturing, he set up a warehouse, everything in 1999, and then Wow. we got that up here. So it's almost 22 years now when GC is in India. So I got an Wow. opportunity as marketing communications manager. So where all the communications, research work, everything, and then I was handed over that okay, you are also going to take care of students who are going to take up research. You have to guide them. Then slowly I became the scientific and academic affairs manager. So in a year, so where I started training, doing workshops, doing lectures, and hands-on workshops, and also guiding PG students on what to take up for research. What are the various Wow. products to take up of research? Other than that, we do evaluations. I'm also involved in the quality check of, that GC India manufactures a product called as Yes. Flexseed, that is VPS impression material. So I am the quality check in charge. I do all those quality check tests like setting time, damage stability, everything I do. Once I put a tested okay, it goes into the market. So Wow. that is what I did, and we do a lot of these discussions on what kind of products we should get, what are the things we should have in that, what does really the dentist want. Me being a dentist, my boss being a dentist, that helps us out a Hmm. lot to understand what dentist requires. So this is Right. my background, what is there, and see, I just wanted to be connected with dentistry, do versatile. I did my Hmm. clinical practice. I did my Hmm. clinical practice. I did for almost 14, 15 years. I did my clinical practice. Now also I do a little bit of consultations with my Yes. friends where I do aesthetic cases and all that. So Right. I am in touch with dentistry. Other than that, I do all these things. So this is what is my background, where I am Right. there. Right. And presently, I'm also taking care of the marketing of GC. So these are the things Wonderful. which is there. Wonderful. So that was my journey from being a lecturer to Hmm. being a Hmm. manager for scientific and academic affairs and marketing Wonderful. for GC. Wonderful. Wonderful, sir. This is completely inspiring journey. I knew that you are working towards this research and GC, but I never knew how you reached up to this point. And one thing I want to tell you that there are so many students of yours जिन जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने आपके अंडर पढ़ाई करी है और होता है ना एक टीचर होता है जिसको जो समझ में आता है एक टीचर होता है जो बस पढ़ा के चला जाता है तो दे वर कंसिडर एज अ टीचर जो जिससे समझ में आए चीजें और जैसे आप बता रहे हैं कि प्रोस्टो में जब हम पढ़ लेते थे और जब जाते थे लैब में आफ्टर 1 ईयर तब समझ में आता था कि जो पढ़ा था उसको अप्लाई कैसे करना है सेम आपने पहले ही ये पढ़ाया कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है चीजों की वो बाद में समझ में आती है कि क्लिनिकल उसमें उस पढ़ो ही उस तरीके से कि उसको अप्लाई कर सको और जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो मुझे ऑब्वियसली उस चीज की वाइब फील हुई थी कि सर ने जब सिखाया तो समझ में आ रहा है कि वाई जीआईसी इज इम्पोर्टेंट हाउ डू यू हैव टू यूज इट हाउ डू यू हैव टू अप्लाई इट वेयर डू यू हैव टू अप्लाई इट सो वंडरफुल सर मैं जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा था आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू जो कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो क्लिनिकल के साथ साथ रिसर्च में जाना चाहते हैं इंडिया में रिसर्च जैसे आप एक लेवल पे लेके आए कि यू रीच्ड अप टू जीसी अल्टीमेट पोस्ट टू बी इनटू रिसर्च तो हाउ टू अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स एंड हाउ टू रीच अप टू दिस पॉइंट जहाँ पे और इसके लिए क्या नॉलेज पहले आप गेन करें पीपल फील कि ओके नॉलेज नहीं हमें डिग्री चाहिए ये जॉब्स डिग्री से नहीं आपको नॉलेज से ज्यादा मिलती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका इंटेलेक्ट आपका नॉलेज वो लेवल पे था तो क्या चीज के लिए रिसर्च के लिए कैसे अपना माइंड ओपन करना होता है और कैसे प्रोसीड करना होता है दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ताकि लोगों को पता लगे To be frank, Sagar, देखो, first things is like, when you pass out as a BDS. So the first things which a lot of my students also ask, sir, practice करें या फिर MDS करें या कुछ और करें? राइट You know, राइट so that is the question they ask. Like, and राइट if you want to come into a corporate life like this, right? हम्म Thing is, देखो, degree, I'm just a BDS here. I'm proud to say that I'm just a BDS. I don't mind, I don't feel bad that
saying that I'm just a BDS, I didn't do my post graduation or anything. So it is all, first of all, you have to make up your mind what you want to do. Whether you just want to do, you want to see, you know, कहीं भी आप interviews में जाते हो ना, the most common question क्या होता है कि where do you want to see yourself after 5 years? You know, Yes. we take that question as very, you know, या cliche question है, बहुत stereotypical question है, अजीब सा question है, साला हमेशा यही पूछते हैं हमसे. It is not like that, but the thing is that question, if you answer, if you think about it and answer it properly, thinking about it, कि where I want to see myself after 5 years. I want to be in my clinical practice. I want to finish off my post graduation and do something for academics, or I want to go towards something which is related to dentistry and where I can be help to the dentistry. That you need to decide. And for that, you need, first of all, you need knowledge. डेफिनेटली यू नीड नॉलेज. सबसे पहली चीज जो नॉलेज से ज्यादा चाहिए होती है वो है आपका डिटर्मिनेशन कि आपको क्या बनना है. आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो. तुम आप अपने आप को क्लिनिक में देखना चाहते हो या फिर कॉलेज में देखना चाहते हो या इस टाइप के कॉर्पोरेट जॉब में देखना चाहते हो जहां पे you know there are opportunities. Now there are a lot of companies who are coming up and hiring dentists because you know hiring dentists is better because they have better knowledge than anybody else, better knowledge than any the general MBA graduate or a biomechanical engineer or anybody. So they have better knowledge about the dentistry, and it can be easy for them to make them make dentists understand, or they can understand dentists. So first things first is determination. आप ये सोचो कि भैया मेरे को करना क्या है, right? Take guidance, right? Take guidance from your mentors, from your teachers, from anybody. Then with that guidance, just don't go blindly. Sit down and think. Sit down and think, because you know mentors होते हैं आपको गाइड करने के लिए, बट द थिंग इज वो गाइडेंस का इंपॉर्टेंस तभी आता है जब आप डिटरमिन हो. आप ब्लाइंडली कभी किसी चीज को फॉलो मत करो. अगर आज मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुम ये सब छोड़ो यार, क्लिनिक विनिक छोड़ो, तुम आ जाओ इसमें, मैं आपको नौकरी दिलाता हूँ, आप इसमें घुसो, डोंट बिलीव मी, नेवर बिलीव मी ऑन दैट, राइट? यू लिसन टू मी, डिटरमाइन. फर्स्ट आप अपने आप सोचो, आप अपने आप सोचो, आप अपने आप ये करो, एंड देन यू डिसाइड कि वेयर यू वांट टू गो अहेड, राइट? देन you think of, then once you have determined that I have to go here, you'll slowly start acquiring that knowledge, right? You'll slowly chalk up your plans, right? You know, you might have if you I want to quote that 7 habits of highly effective people. उसमें बोलते हैं कि sharpen your skills, right? You need to sharpen your skills. Keep the end in mind. Always keeping the end in mind will help you in going towards that, कि मेरे को क्या क्या करना है, किस स्टेप पे क्या करना है. Then go towards that. उसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करना है, इंडस्ट्री का नॉलेज एक्वायर करना है, व्हाट शुड बी माय जॉब रोल, मैं उसके लिए कैसे तैयार हूँ. गो लाइक दैट. आई गेट कॉल्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, सर आपके यहाँ नौकरी है, हो सकता है. मैं उनसे यही पूछता हूँ, भाई सी नौकरी, चलो नौकरी है, बट द थिंग इज आर यू रियली कीन ऑन गेटिंग इनटू इट, और जस्ट 1 साल मेरे को करना है? बिकॉज आई एम सॉरी टू से, अभी क्या है ना, माइंडसेट इज लाइक मुझे बस बीडीएस में कुछ नहीं रखा. बॉस बीडीएस में बहुत कुछ रखा है. नेवर थिंक दैट बीडीएस में कुछ नहीं रखा है. इट्स जस्ट दैट टेक आउट दैट फ्रॉम योर माइंड. बीडीएस यू कैन डू, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, बट इट नीड्स सर्टेन टाइम. एवरीथिंग पकने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है. So try to understand that. So then if you want to go into this job, keep it in your mind that I have to go ahead in this job. नहीं कि 1 साल मैंने किया, 2 साल मैंने किया, छोड़ दिया यार. नहीं, मेरे को बस 1-2 साल के लिए पैसे कमाने हैं, उसके बाद तो मैं कुछ और देख लूंगा. नहीं, don't do that. Think, yes, I have to do this. I have to see myself in 5 years this way. Then I'll go towards that. So that is what. Keep the end in mind and then go ahead. That is what has to be done. So उसके according तुम knowledge भी acquire कर लोगे. You'll meet people. You'll try to understand what is required. How you got to get trained. मेरे को भी कोई knowledge नहीं था when I went ahead into this. मेरे को बस अपना clinical knowledge था, मेरा dental material knowledge था, मेरा handwork था, वो सारी चीजें थी which slowly helped me in evolving as what I am today.
So Yes. that is what is Yes. required. So always keep the end in mind, and then you can think of Perfect. what has to be done. So you will definitely Perfect. acquire all those, and we all mentors are there, all people are there, all dentists are there at various posts. They'll help you out here, right? You can Definitely. get in touch with me anytime if you want. Really want to go ahead, just get in touch with me. If you want, get in touch with Sagar. Yeah, Sagar is a great mentor, so he'll motivate. So you can just think, and then we can guide you what needs to be done. So, What bus, needs to be that's done? it. That's so wonderful. Yeah, just first So thing first wonderful. is सर आपने determine. डिटर्मिनेशन आपने जो बुक कोट की थी सर आपने ही मुझे इनफैक्ट बोला था टू रीड दैट बुक Yes, सच yes, अ वंडरफुल बुक और उसमें बहुत अच्छी स्टोरी है दैट यू विल इफ यू आर स्टक इन बिटवीन बिटवीन ए जंगल और आपको लग रहा है कि आपको उससे निकलना है तो आप सिर्फ कट करते चले जाओगे ऐसा भी हो सकता है आप डीप चले जाओ यू नीड टू हैव रीच अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री कि आपको दिख रहा हो कि एंड किस तरफ जंगल से बाहर किस तरफ निकलना है absolutely तो वो right. डिटर्मिनेशन डिसाइड करेगी विजन 5 साल में यहाँ पहुंचना है और फिर डिटर्मिनेशन की कट करते चले जाना है तो नॉलेज 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 उसमें बहुत अच्छा ये चीज है कि यू हैव टू फर्स्टली डिसाइड कि एंड में क्या होगा ये पहले से ही दिमाग में रहे तो जी इससे बेटर सर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती थी उस बुक की थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड सर आई नॉट एक्सटेंड दिस क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम इस चीज को भी जान लें आपसे कि स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ बहुत इंटरेक्टिव रहे साथ में जो मेरे साथ जो पढ़ते थे वो सब स्टूडेंट्स हमेशा आपको बहुत अडोर करते हैं और मैं सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं आपको अडोर करते हुए तो अब जो जैसे कोविड टाइम्स में जो कंडीशन हुई है उसके बाद कई बार स्टूडेंट्स डर गए हैं कि हाउ टू प्रोसीड इन दिस और कैसे आगे चलना है तो गुरु जैसे गुरु मंत्रा नाम है तो गुरु मंत्रा दो चीजों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ मैं एक स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट वुड बी और गुरु मंत्र कि आप स्टूडेंट्स कैसे इस चीज से बाहर निकले और प्रैक्टिशनर्स कैसे अपने आप को फील करें कि इट विल बी गुड right. देखो यार, see, COVID, nobody expected this going to be such deadly thing which is going to affect everybody, especially dentist को बहुत. But the thing is, हमेशा हम बस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आए हैं sterilization, right? राइट Protecting ourselves as well as the patients. हम बस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आए हैं. We never try to implement that. I'm sorry to say, a lot of us, we never try to implement that. हम ले एग्री लेते थे स्टरलाइजेशन. पीपीई किट कितने लोग पहनते थे until this COVID came, राइट right? So first things first. राइट See, basics is very important. जब कुछ बताया जाता है कि डेंटिस्ट को पढ़ाया जाता है कि भाई ये सब प्रिकॉशंस हमको लेनी है, right? So we have to take that, and nothing to worry about in COVID and earlier. Now, I think the things are getting far, far better. What we saw बेटर in the first year and last year in the beginning, it's यस यस still it's getting way better. And thing is, now we are prepared. Now we are राइट prepared to do things. Now we are prepared. See, precautions sabne lena hai. And we dentists, we don't have to worry, either the students or the practitioners. Just make sure that you take proper precautions for yourself as well as for the patients. That's it. Don't worry, yaar. We see, हम लोग क्या क्या फाइट नहीं करते हैं डेंटिस्ट्री में. You fight your teachers, you fight your friends, you fight your syllabus, you fight your exams. और ये this is a वाओ kind of exam for you, यार. So you will fight वाओ it out, दिस इज right? You यस come out positive. And डरने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि if you take all the precautions, I don't think so कुछ problem होने वाली है. I know we have lost um, very great people last year in dentistry because of COVID. यस But सबका एक टाइम होता है, कुछ नहीं कर सकते हम उसके लिए. It was really a great loss. But the thing is, if we take precautions, डरने वाली अगर वही है ना यार, it's nicely said, no, डर के आगे जीत है. So that's what is the major thing. So it's a very nice caption for the ad. But the thing is, it is. If you just go यस beyond your fears, you will win. So you just have to go beyond your डेफिनेटली fears. Don't worry about anything. The only thing is, make sure you take precautions for yourself as well as for the patients. So that itself is the राइट major thing. और कुछ डरने की बात नहीं है, because being in GCA, I also see that first क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर हमने बहुत डेंटिस्ट को बहुत मुश्किल में देखा. So, it राइट directly, so dental practice is directly related to our sales. Am I right?
सो फर्स्ट ईयर में हमने बहुत मुश्किल में देखा, स्लोली डेंटिस्ट इवॉल्व हुए, डेंटिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है, slowly it all went up very nicely, and everybody coped up, and I'm really thankful to all your dentists who have joined and who all are there, like thanks to you guys. Yeah, you guys really fought well, and that is the reason I think we as a company in GC we are doing good. So we Right, so that's a very positive note for us, and we are fighters. Yeah, right. let's fight it out, and uh, let's already हमने हरा दिया है काफी और हरा सकते हैं. So we can सर go जब ahead. मैं आपसे पहली बार मिला था, व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, एक ऐसा लेसन जो मेरे माइंड में हमेशा के लिए चला गया, मैं चाहता हूँ एवरीबॉडी शुड लर्न दिस फ्रॉम यू। आपने मुझे बताया था, क्योंकि मेरा माइंडसेट भी यही था कि जीआईसी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कॉम्पोजिट। एक स्टीरियोटिपिकल थॉट कि अरे when we'll do GIC we'll ask for lesser charge, and when we'll go for composite we'll go for more charge because it is not as good as composite। तो Hmm. ऐसा एक फीलिंग उस टाइम पे थी, जब आपने मुझे समझाया तब से मेरे चार्ज इक्वल है, मेरा Hmm. कॉन्फिडेंस इक्वल है टुवर्ड्स बोथ द मटेरियल्स, क्योंकि आई नो हाउ टू वर्क विद जीआईसी, व्हेन टू वर्क विद जीआईसी। सो थोड़ा सा संक्षिप्त में, Yeah. क्योंकि मैं आपका See, ज्यादा नहीं yeah, करता। मैं बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ कि हाँ जी सर, हाँ जी। भाई, see my you know Sagar that my lecture modules are called as let's keep it simple and smart. So it's यस सर। basically keeping everything simple. तो जितना simplification मैं कर सकता हूँ डेंटिस्ट्री को, उतना मैं करने का ट्राई करता हूँ। बेसिकली क्या है ना, when you see GIC और composite, they both are two different materials, we all know. The thing is, we first things first is we need to understand the where to use what. यस मेजर यस थिंग वो है कि हर एक मटेरियल का एक एक यूटिलाइजेशन है, वेयर टू यूज. पर्सनली आई लव GIC, right? I I too love composites because of the aesthetics, but the thing is, GIC is like a healing material. उससे अच्छा यस हीलिंग मटेरियल और कोई नहीं है. कंपोजिट हील नहीं कर एग्री। सकता. मानता हूं कि हो सकता है उसका थोड़ा सा लाइफ कम हो या समथिंग, बट द थिंग इज व्हाट इट डज. सी मेरे को मेरे टीचर्स ने जो सिखाया था वो ये था कि एक कि भाई दांत निकालने की कोशिश मत करना, दांत को बचाने की कोशिश करना. राइट, दैट इज व्हाट माय टीचर्स टॉट मी, दैट जितना हो सकता है दांत को बचा. और दांत को हम कैसे बचा सकते हैं? GIC इज वन थिंग विच कैन सेव योर टीथ, right? राइट। Composites can give you aesthetics, right? But there are a lot of techniques where you can use both GIC and composite together and यस do the things. So मैं अपने lectures में एक चीज बोलता हूँ कि there are three ways. One is GIC is a therapeutic material which heals the राइट tooth. Then you need, wherever there is dentine, you require something called as dentine like material. Don't use कि हाँ जो भी composite मार्केट में, composite हजार तरीके के composites हैं. So there is something called as राइट dentine like composites. Use dentine like composites in dentine. So there is something called as biomimetics. So दो तरीके के biomimetics में मैं डिफाइन करता हूँ. One is aesthetic, जो एंटीरियर्स के लिए चाहिए, जहां पे ओपेक और एनामल एक्सेट्रा आता है, ट्रांसलूसेंसी. पोस्टीरियर में फंक्शनल बायोमिमेटिक्स चाहिए होता है. दैट मीन्स वेयर यू यूज अ मटेरियल which is dentine like in dentine and enamel like in enamel. So if it is deep, go with राइट। GIC. So it's all mixture. So you need to understand the selection of material. That is very important. And GIC per se is one of the best materials which will heal the teeth. So first heal the teeth, then you can think of other things. So that is what is वाह। GIC all about. That is, and मेरा एक module है where I talk about which material to choose. Restorative dentistry know-how. So which is basically कौन सी चीज कहाँ पे कब यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है. Composites भी different तरीके के हैं, कौन सा composite कहाँ यूज करना है, कौन सी GIC यस कैसे यूज करना है. All that I teach. I simplify things in that way so that you understand. So काफी लोग ये सोचते हैं कि राइट GIC is an alternative for composite or composite is an alternative. No, राइट। both are not alternatives. They are not at all versus. They are always GIC and composite. एंड composite, yes, how Yeah. wonderful। I would personally recommend कि जब सर आपका
कोई lecture हो तो all people can attend and learn this thing from you. In fact, Sure. I am trying to reach up to you. Yeah. The कि thing is, please, last pandemic I couldn't travel much, but usually I yes, travel 15 days a month for all these lectures and workshops. So uh, yes, I think if all goes well, touch wood, with this new thing that has come up over Omicron, I might start traveling from January end onwards. So let's see, we can all meet whenever I'm there in your बिल्कुल town. सर, I Yep. would this would be my pleasure, and Yep. all of us will be feel pleasure. Sir, traveling पे बात हुई, तो I will end this session with your traveling things because I'm amazed by your traveling plans and the way you conduct your life. I can think the coolest person to follow up. तो मैं चाहता हूँ पहले तो सिम्बा को भी मैं देख रहा था अभी was waiting Yeah, and he's राधे, yes, just, राधे का yeah, नाम कैसे भूल Simba is सकता हूँ. just sitting तो down with me I and want to troubling me see because how cute. he is a big attention gainer. So he just Oh, keeps having my attention always. So he's that wow, way. Simba, chalo, niche बैठो. wow. हाँ. So he's तो that, and सर हाउ डिड यू आपने जैसे कंडक्ट करी अपनी लाइफ तो उसमें ट्रेवलिंग आप कहाँ जैसे आई नो दैट यू आर ए पर्सन जो एडमेंट है टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स कि ओके आई वांट दिस आई yes, लाइक दिस आई विल डू इट yes, ये मुझे yes. फील होता है आई वांट दिस टैटू आई विल हैव इट आई वांट टू ट्रैवल दिस कंट्री आई विल डू दिस आई वांट टू हैव ए पेट आई विल हैव इट आई हैव सीन वेरी लेस पीपल टू हैव सच क्यूट two opposite kind of pets, a bird and a dog, together with a person. So how did आपको ऐसा क्या लगता है कि okay these are the things जो अभी की जनरेशन नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए स्ट्रेस बस्ट करने के लिए to just break out the shells. फर्स्ट थिंग यार, अपना पैशन कभी मत छोड़ो. जो भी आपका पैशन है, नहीं है तो बना लो कुछ, राइट? Right, लिव योर पैशन, लिव योर लाइफ. See, this life is right, not to just काम करते हैं, ठीक है. पैसा कमाना है, सब कुछ है, सब कुछ है. बट द थिंग इज यार, लिव लाइफ किंग right, साइज बोलते हैं ना. लिव लाइफ, लिव योर लाइफ, right, है ना. जो आपको अच्छा लगता है ना, वो करो. दुनिया जाए भाड़ में, जा, लोग बातें बनाएंगे, लोग बोलेंगे, लोग ये करेंगे. आई नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट. आई right, I travel. I travel to teach. I love traveling. People said, you should not wear these kind of clothes. You should not do these kind of hairstyles. You should not have tattoos. You should not do that. I said, I give a damn, man. It's my life. I live according to my wishes. Right? What I feel definitely. happy, I'll do that. Simba and Radhe, they are my kids. And Radhe came both of them, Radhe came when the pandemic happened first time, right? Okay, It was just like God's gift kind of thing. She came. wow. She gave a lot of relief in stress. Simba came again at the end of 2020, that is in December. And these two guys are like my most biggest stress busters. They are like, you know, बोलते हैं ना कि dogs are the man's best friend. So best Yes, friend, they are all right, like kids. Yeah. They're literally the biggest stress busters. अगर if I can advise, one thing is, please keep a dog. Please adopt a dog or keep a mm, dog or have a right, dog. See, they are like, they love you like anything unconditionally. They do everything, and right. they literally ease you out of all your Oh. bad day. That is the thing. So Sir, that's all is I my. feel मुझे स्ट्रेस बस्टर आप मतलब आप मानेंगे कि I मैं think आपके पिक्चर देख you have got a cat, right? यस यस सर अलॉन्ग विद Yes. दैट मैं पिक्चर देखता हूँ जब आपकी राधे और सिम्बा के साथ मुझे आई फील सो गुड इनफैक्ट मैंने उस कैट का नाम सिम्बा ही रखा आप ही से अच्छा. इंस्पायर होके आई फील सो गुड अबाउट इट कि बहुत वंडरफुल फीलिंग मुझे आती है वो चीज सर द लास्ट Yeah. थिंग जो बहुत मुझे दिल से पूछनी थी आपसे क्योंकि आई एम ए पर्सन जो बहुत रिलीजियस नहीं है बट आई बिलीव इन शिव ए लॉट I believe that he is there. I can feel him. I can feel that he is the number one, and no one is like that, right? So the person with whom I got married to, she is also into Shiv. She is also not in very religious but very spiritual about Shiv. She's from And Davangere, I suppose, right? sir, and Yes. आप That's चिकमंगलूर से हैं nearby. Yeah. and she was very inspired, very excited about it. उन्होंने बोला आप लाइव में ये बात सर को जरूर बताइएगा कि I was also born in चिकमंगलूर.
She was Oh, also that's born in great. Chikmagalur That's great. actually. Yeah. So Oh, great. I'll end this session with this positive note: ki what is the meaning of Shiv in your life, and how do you see him helping you always? So this you can see, right, right. I think. Okay. Right. So if you can Yes, see sir. Yes, I see this, in the picture also. so this is all Wow. the Shiv Mahamrutyunjay mantra, my new tattoo. So I am also a Shiv Bhakt. So Right. Shiv and Shirdi Sai Baba, so they are the guiding light for me. So they're always, Hmm. so it's wonderful to listen to you on that. नो सर इट्स समथिंग जो मुझे एनर्जी आपसे फील हुई अबाउट शिव और काफी बुक्स पढ़ी मैंने काफी चीजें देखी बट आपका जो कंडक्ट ऑफ लाइफ है जैसे आप बोल रहे थे कि पीपल यू नो व्हेन एक पर्सन अपने हिसाब से लाइफ जीने लगता है तो दूसरों को दिक्कत होती है दे विल स्टीरियोटाइप यू फॉर एग्जांपल सम पीपल से यार तू जाट है यू डोंट डू जाट काइंड ऑफ स्टेप्स या पीपल मस्ट हैव बी टेलिंग यू कि आप मेंटोर हो तो यू शुड नॉट हैव टैटूज ठीक है और यू शुड नॉट बट हमें वो टैटू की वजह से आप मेंटोर अलग तरीके से हो और इंटेलेक्ट के लिए अलग तरीके से वो इंटेलेक्ट टैटू इंटेलेक्ट को थोड़ा निकाल लेगा सो दिस इज समथिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम यू कि लिव ऑन योर ओन टर्म्स एंड आई That is बिलीव what दैट आपसे that is what Mahadev did, right? He lived on his यस own terms. यस Yes, this is what we learn from him and from you also. Sir, I'll not take much of your Sunday. Please enjoy your Sunday. Thank you so much. मैं Thank थोड़े you. से Thanks a कमेंट्स पढ़ lot. लूँ Yeah, please. ताकि ऐसा ना लगे सबको कि हम कमेंट पढ़े बिना चले गए हाँ, ओके 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 सबसे पहले सर डॉक्टर रवि पांडे सर जिनसे मेरे साथ कल मैंने उनको किया वो उनके साथ शो किया वो आपके बहुत बड़े फैन हैं उन्होंने भी बोला कि okay. ही वाज एक्साइटेड टू बी एंड ही वाज हियर आल्सो डॉक्टर स्नेहा का हाय सर हाय राधु ही रोड शी रोड Yeah, सॉरी yeah. She is a very good friend. Yeah. Oh, Dr. Shekhar Singh, great sir, and along with this was I think I saw Dr. some questions Pratik in Bam. between. Yeah. Oh, I'll see sir. Dr. Pratik Bam, प्रोस्टोडोंटिस्ट बन गए हैं या बन रहे हैं और आप Pratik is a उनको शायद moderator जानते of हो my group. Yeah. वाह It's a 100% very, ट्रू very, very सर उसको जो अभी अवार्ड मिला है परफेक्टली मिला है उसको emerging dentist or what he got. वाह It's, वाह yeah. Dr. Ravi wrote awesome conversation. Thank you. And question. Just 2 minutes, sir. I saw one. Okay, how to deal with patients who bargain or compare prices from nearby. This is something which I'll talk to you personally, Dr. Dipti. I know her. I and Yeah. उनको मैं पर्सनली बताऊंगा और आपकी भी सर बात रखूंगा. I'll discuss it with you also. Very true, sir. Thank you. There was a comment from one more person, sir. Just give me 1 minute. Yeah. I'm not very good at it. Okay. Uh, Having worked into scientific affairs, being a BDS before completing my MHA is something I have experienced myself, and I totally agree with your thoughts. This is what the internet dentist Dr. Paritesh Dubey sir, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है. He wrote, and he's also into this, and he also wrote that the sessions are always unique in their own way and enriching. Thank you, डॉक्टर साहब और सर जैसे लोग हमारे सेशंस में आके बनाते हैं उसको enriching. Thank you, sir, for your time. Thank you so Thanks very a much. lot. बहुत Thank you. Thank you very बहुत much. कुछ सीखा और आपके सेशंस में आगे से लाइव आके खुद आपके सामने बैठ के सीखने का मजा अलग होता है वो मैंने फील किया है एंड आई वांट एवरी पर्सन एवरी डेंटल एस्पायरेंट एंड डेंटल सर्जन शुड फील इट कि सर कितनी सिंप्लीफाइड तरीके से समझाते हैं इतने छोटे से सेशन में वी लर्न सो मच तो सोचो 1 घंटे के सेशन में हाउ मच वी कैन लर्न फ्रॉम यू थैंक यू सर हैव ए Thank गुड you. नाइट Thanks a lot, Sagar. और Thanks a टेक lot. लीव Thanks a lot. Right. Bye bye. Thank you. बाय बाय सर थैंक यू Bye bye.